Hello friends, welcome to Sunday Analysis with SD. मेरा नाम है शानंदु दास. I'm a forex and commodity market specialist with global market and global macro as also as an area of specialization. I'm attached with Elan Markets. There are two courses there from Elan Markets on my side. Let's quickly have a look at them. If you go to SAA, you will quickly find these two courses, which covers the fundamental of currency, commodity, global markets, bonds, and this one gives access to my special trading setup. So let's go to our weekend analysis. We'll first go to trading economics. Trading economics will make the data impact as 2-star. And कौन सा data are important for next week? This is an every week job a trader must do in the forex and commodity market. Equity की भी important है. तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा मुझे दिख रहा है तो विच विल इन्फ्लुएंस जापानीज येन अ बिट, विच इज द जापान का इन्फ्लेशन डेटा. इफ इट कम्स ऑन द हायर साइड, this will give a bid on Japanese yen. Japanese yen will gain from a higher interest rate. Durable goods order is another focus on the US side. If it comes stronger, this will act as a positive factor for dollar and interest rate. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है दैट इज ऑन वेडनेसडे यूएस का जीडीपी का दिस इज द सेकंड एस्टिमेट ऑफ द लास्ट क्वार्टर. So this will be also an influencer for the interest rate and the dollar. So higher GDP will influence means कि फेड रिजर्व जो है वो लॉन्गर टाइम अपना रेट को हाई रखेगा एंड that means अगर US GDP बेहतर आया है, it will keep an upside pressure on interest rate and that will be positive for the US dollar. इसके अलावा जो डेटा आ रहा है that is crude oil का डेटा, वीकली डेटा, इन्वेंटरी डेटा, several Fed speakers we have. Thursday we will have our natural gas inventory data along with India का GDP data. Will not be majorly influential for currencies but can boost the stock sentiment. फाइनली मार्केट जो डेटा पे थर्सडे फोकस करेगा इज द पीसीई प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का फेडरल रिजर्व का वन ऑफ द फेवरेट गेज ऑफ इन्फ्लेशन है. फेड इस इन्फ्लेशन रीडिंग को इंपॉर्टेंस देता है एंड इफ दिस इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन this will be our dollar negative event. इसके साथ साथ मार्केट विल फोकस ऑन व्हाट दीज फेड स्पीकर्स मेस्टर, गुल्सबी, बॉस्टिक, कॉलिंस, विलियम्स, ये लोग क्या कम्युनिकेट करना चाहेंगे रिगार्डिंग रेट हाइक के बारे में, उनका क्या आउटलुक है. अब ये देखने के बाद वी विल गो टू अ बिट जो आई थिंक वी विल गो टू मैक्रो माइक्रो में वी विल गो टू MM डेली में आई हैव गॉन टू this US personal consumption expenditure. This is the US inflation. Last video में we have discussed about it. That overall pace of inflation जिस तरीके से वो गिर रहा था, it has now come down. Core inflation has somewhat stabilized or stabilized above Federal Reserve का target of 2%. Whereas core CPI is about 3.9%. So Fed is looking for further improvement, मतलब decline in the core CPI, and वो हमें rate cut की तरफ fast लेके जाएगा. And with Federal Reserve का communication इस साल has been very hawkish. At the beginning of the year हम लोग देखे थे कि market was pricing about 150 basis points rate cut from Federal Reserve. और मार्च में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे. अब वो रेट कट एक्सपेक्टेशन और पीछे जा चुका है. नाउ जून इज द करंट मीटिंग जहां पे बॉन्ड मार्केट इज फोरकास्टिंग देयर विल बी अ रेट कट फ्रॉम फेडरल रिजर्व. बट दैट डिपेंड्स ऑन द फेड कैसे कम्युनिकेट करेगा. तो अब जो नेक्स्ट मीटिंग आ रहा है फेड का ऑन 21st, जिसमें हम लोग अपना लाइव सेशन करेंगे,
सो वो मीटिंग में देखने वाला बात ये होगा, ये जो नए पाथ बना है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन का कि 5.25 द रेट कट इन जून, क्या ये मतलब फेड इज इट फाइन विद दैट, और ये अपना कम्युनिकेट चेंज कर रहे हैं कि इसको आगे लाने के लिए या और पीछे धकेलने के लिए? आई डोंट थिंक इट विल गो farther behind, but definitely Fed अपना communication के साथ can once again make the March or the May meeting alive. Means May meeting में भी rate cut possibility हो सकता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो ग्लोबल पिक्चर में विच आर द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स आर गोइंग अप। यूएस स्टॉक्स, जापान स्टॉक्स, इंडिया स्टॉक्स ऑल आर फायरिंग। यूएस बॉन्ड्स हैव गॉन अप बट रिसेंटली फिर से रिवर्सल आ रहा है। दिस शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स से हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। वी हैव एग्जिटेड दोज इन्वेस्टमेंट्स। अब हम लोग जाएंगे कि एक बार शिपिंग चैनल का हालत देखेंगे। ग्लोबल कंटेनर्स फ्राइट इंडेक्स चाइना का इज कमिंग डाउन या स्टेबलाइजिंग। तो हो सके जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस हम लोग देखे थे रेड सी में, दैट इज अ बिट कमिंग डाउन। यूरोप में जो कॉस्ट दिख रहा था, यूरोप सर्विस, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ये हम लोग स्क्वायर ऑफ कर दिए। नाउ वी कैन सी क्लियरली द फ्रेट रेट्स जो थे, जो बढ़ा था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द सुएज कैनाल और रेड सी एरिया, इट इज समवॉट स्टेबिलाइजिंग whereas दिस गोइंग डाउन। क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो रहा है? उसके लिए मैं और एक इंडेक्स को नजर कर रहा हूं, दैट इज द सुएज कैनाल से कितना शिप पास ऑन हो रहा है। पर मैं 7 डे का एवरेज ले रहा हूं एंड द नंबर ऑफ शिप्स जो पास ऑन कर रहे हैं थ्रू सुएज कैनाल इज सिग्निफिकेंटली स्टिल गोइंग डाउन। एंड नहीं लग रहा है देख के कि स्टिल द डेटा फॉर 28, 5 दिन पहले का डेटा से द क्राइसिस जो हो रहा था रेड सी में, ये ओवर हो चुका है। अगर ये ओवर नहीं हुआ है, देन व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड ये जो चाइना का ड्रॉप हुआ है? दिस कैन बी अ चाइनीज वीकनेस जो ऑलरेडी था, जिसके वजह से ये फ्रेट इंडेक्स काफी डाउन था। द वंस अगेन चाइनीज वीकनेस का थीम कुड बी सेटिंग इन, सो चाइना वीकनेस मे नॉट बी कंप्लीटली ओवर। सो विल कीप एन वॉच कि कौन सा फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस इज थोड़ा लेटेस्ट डेटा है, 23rd। शिपिंग डेटा थोड़ा ओल्ड है, 20th का, बट शिपिंग डेटा को देख के नहीं लग रहा है कि क्राइसिस इज फाइनली ओवर। इसके साथ अब हम लोग चार्ट में चले जाएंगे तो लुक एट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आइडियाज और इन्वेस्टिंग पोजीशन आई एम थिंकिंग अबाउट। इसके लिए आई विल यूज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप और द मदर सेटअप। We'll quickly look at the bond market first. This is a green candle after red move. This is not good. This is not good means interest rate positive, bond price negative, but ये short term interest rate जो है वो ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पाएगा, because Federal Reserve clearly has hinted there will be rate cut of 50 basis points this year. इस साल अगर 50 basis points rate cut कर रहे हैं, definitely फिर ये शॉर्ट टर्म रेट जो फेड के साथ वेरी मच लिंक्ड है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। बट वेयर एज द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कैन गो अप बिकॉज फेड हैज लेस कंट्रोल एंड द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट 10 ईयर इज सस्टेनिंग अबव दिस फ्लैट लाइन ऑफ 4.12। यहाँ पे एक बाई सिग्नल आया है, दिस इज वेयर वी एग्जिटेड। वी हैव I've recommended full exit of the LT, जो स्विंग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में TLT के जरिए हम लोग करते हैं, इज बेटर वी एग्जिट एंड वेट फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। यहाँ पे मैं अलर्ट लगा चुका हूँ, आई प्रेफर अ ब्रेकडाउन बिलो 4.05 फिर से TLT में इंटरेस्ट होने के लिए। TLT इज अ सिक्योरिटी, जो लोग नहीं जानते हैं आप IND मनी में जाएंगे, IND मनी, उसमें TLT लिखने से TLT सिक्योरिटी विल कम अप। दिस इज द 20+ years ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स।
and recently after a good ride, this was a profit booking area. As you can see, it has moved further lower from this point. तो फिर से हम लोग इंतजार करेंगे एक प्रॉपर एंट्री का, बट दिस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट रिमेनिंग एलिवेटेड अच्छा बात नहीं है ओवरऑल ऑन द इक्विटी फ्रंट। ये डॉलर पॉजिटिव भी है, और लास्ट डे ओवरऑल डॉलर इंटरेस्ट रेट हैज गॉन डाउन, ये डॉलर नेगेटिव, बट ओवरऑल यूरोप का इंटरेस्ट रेट हैज आल्सो गॉन डाउन और फास्टर। तो ओवरऑल डॉलर के लिए उतना नेगेटिव नहीं हो पाया, बिकॉज इट वाज यूरो नेगेटिव, इट वाज डॉलर नेगेटिव। सो यूरो यूएसडी थोड़ा रेंज बाउंड ही था। सो इंटरेस्ट रेट का जो मुझे मूव दिख रहा है, दिस इज मुझे मोर सेंस आ रहा है, इट इज मोर टुवर्ड्स डॉलर पॉजिटिव इन द कमिंग वीक। मैं ध्यान रखूंगा कि 10 ईयर 30 ईयर आने वाले वीक में विद द पीसीई प्राइस इंडेक्स कैसे बिहेव कर रहा है। सो बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन विद द यूएस जीडीपी एंड स्पेशली विद द पीसीई प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए फॉलो करने के लिए। अब हम लोग आ जाएंगे करेंसी में ट्रेड देखने के लिए, व्हाट आर द ट्रेड्स जो चल रहे हैं। यूरो यूएसडी में बुल एंट्री के बाद पार्शियल एग्जिट भी आया है विद द कमबैक, देयर वाज अ बिग स्पाइक, लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो थोड़ा लाइट पोजीशन लेके आई एम लॉन्ग ऑन यूरो यूएसडी। जीबीपी यूएसडी मैंने पोजीशन लिया था, बट व्हाट इज कंसर्निंग फॉर मी इन द जीबीपी यूएसडी कि ये जो लेवल था 1.2664, इसके आसपास ही ये क्लोजिंग दे रहा है। आई वुड लाइक अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, अगर ऐसा हुआ तो आई ऐड फर्दर क्वांटिटी ऑन जीबीपी यूएसडी। अभी मार्जिनल फोमो क्वांटिटी लेके ही आई विल कंटिन्यू विथ यूएसडी जीबीपी यूएसडी। डॉलर येन में आई एम बुलिश, और आप लोग जानते हैं क्यों, माउंटेन टॉप का ब्रेक हो चुका है। ओवरऑल इट हैज आस्क्ड मी टू ऐड पोजीशन, सो यूएसडी जेपीवाई मैं अपना पोजीशन होल्ड करते रहूंगा। आने वाले वीक में विद जापानीज इन्फ्लेशन में ये कैसा इंपैक्ट हो रहा है, प्लस यूएसपीसी, दीज टू डेटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेयर, जापानीज इन्फ्लेशन एंड यूएस इन्फ्लेशन डेटा। इसके साथ हम लोग देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, विच इज अ वैल्यू ऑफ द डॉलर अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज। दिस इज रेड बट बैकग्राउंड इज येलो, नॉट सिग्निफिकेंटली बियरिश, सो इट्स मोर ऑफ अ मिक्स मार्केट सिचुएशन होके बैठा है डॉलर में। भले ही रेड कैंडल, प्रेफर्ड ट्रेड्स इज बाय ब्रेकआउट एंड बाय सपोर्ट विथ कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी अराउंड 50%। तो मैं एक बार सेटअप को फोरेक्स में टर्न करा लेता हूं, जिसके वजह से I'll be able to see the meter as well. USD strength is in a falling mode, whereas GBP, gold and silver strength are rising. तो GBP INR जो है इसमें भी ट्रेड बन सकता है। This is just a comeback, अभी भी बहुत दूर है मेन रेजिस्टेंस। Once this breaks, then only I'll be interested in adding bigger quantity with these. There are a lot of congestion zone. So GBP INR, I'm still in a wait and watch mode. GBP USD, I've entered the FOMO quantity. Euro INR, I have entered, but with the spike, I have booked. Euro INR, I'll wait for the empty line breakout to add new position into Euro INR. Empty line is the, ये जो red line है, this is basically the empty line. इसके साथ साथ हम लोग चले जाएंगे दो ब्यूटीफुल ट्रेड जो मेरे चल रहे हैं, दैट इज यूरो येन लॉन्ग एंड पाउंड येन लॉन्ग। काफी ब्यूटीफुल प्रॉफिट में है यूरो येन। पाउंड येन भी 190 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड हैज मूव्ड। फर्दर पोटेंशियल है पाउंड येन को, इट कैन राइज गो अप। सो आई हैव इंक्रीज पोजीशन इन पाउंड येन, और यूरो येन हैज reached close to the level, so I have reduced marginal position in euro yen as it has reached जो level की हम लोग बात किए थे, it has almost reached those levels. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे गोल्ड में एक अर्ली बाय सिग्नल आया है। आई विल नॉट बी बाइंग गोल्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 2040 to 2060 या 2037 to 2060 एरिया। सो अनलेस ये जोन का कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, आई विल नॉट बी वेरी बुलिश ऑन XAUSD। भले ही एक बाय सिग्नल आ रहा है, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द फोमो क्वांटिटी। फोमो क्वांटिटी भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 2037 फोमो डालने के लिए।
XAG USD गोल्ड से ज्यादा बुलिश था दिस वीक। इनिशियली एक पोजीशन फोमो लिया था, डिड नॉट वर्क आउट, वेट एंड वॉच मोड है मेरा सिल्वर में। I want more confidence with a price action bullish alert I have given, which is full green candle. तब जाके I'll think about what to do in the silver side. अब हम लोग आ जाएंगे commodities में। Commodities में 125 minutes is my execution time frame for zinc, copper, aluminium. जिंक में अगर मैं डेली चार्ट में जाऊंगा, लेट मी शो यू इन द डेली चार्ट, फर्स्ट टाइम अ ग्रीन कैंडल एंड बाई सिग्नल, बट ये है मेन कॉन्ट्ररी बाई सिग्नल, मतलब अगेंस्ट द मेन ट्रेंड आ रहा है ये बाई सिग्नल, बट इट हैज अपॉर्चुनिटी टू रीच 219 218.3 एरिया। सो 125 मिनट्स में ये जो बाइंग का सिग्नल आया है, दिस बाइंग का सिग्नल विद दिस ब्रेकआउट इट कैन गो फर्दर अप more towards this mountain top area का टेस्ट 223 224 एरिया का टेस्ट करने मार्केट जा सकता है। दिस जिंक, एल्यूमिनियम इज इन रेंज, विल प्रेफर नॉट टू ट्रेड एल्यूमिनियम। क्लियरली पहले का रेंज तोड़ के एक न्यू रेंज एल्यूमिनियम हैज क्रिएटेड, सो विल ट्राई टू अवॉइड एल्यूमिनियम फॉर नाउ। Let's go to copper. Copper 125 minutes. After a good ride, we talked about, यहाँ पे हम लोग रिव्यू किए थे, उसके बाद कॉपर में फर्दर सेल सिग्नल आया। यू कैन होल्ड सम पोजीशन एज द बैकग्राउंड इज रेड, नॉट मच बिग, क्योंकि सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी इज स्टिल ऑन द लोअर साइड, और it is an contra trade against the main trend. So let's see how it goes. No buying unless प्राइस एक्शन बुलिश, फुल ग्रीन कैंडल या 734 का ब्रेकआउट। यहाँ पे सेल के लिए टारगेट इज द 727, वेरी नियर इज द सपोर्ट एरिया ऑफ एम्प्टी लाइन। सो वी मे नॉट गेट वेरी बिग मूव टू द डाउन साइड, बट करंटली इट इज द बियर्स हु आर ब्रॉडली इन कंट्रोल। अब हम लोग चले जाएंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल में इट डिड नॉट वर्क आउट मच, द बाइंग का जो सिग्नल, आफ्टर दैट आई गॉट अ बैकग्राउंड येलो विथ विच आई हैव एग्जिटेड द क्रूड ऑयल लॉन्ग साइड ट्रेड। दिस डिड नॉट मेक प्रॉफिट, बट लॉस भी कुछ खास हुआ नहीं है, इट स्टॉप्ड एट दिस लेवल। इसके साथ साथ हम लोग नजर करेंगे क्रूड ऑयल का फॉरवर्ड कर्व में। Crude oil का forward curve also saw a big down move. This is a down move clear, but bulls are not over. So immediately crude oil में मैं bearish का तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा हूं, but crude oil में मैं bullish का ही सोच रहा हूं। और bullish के लिए the alert आपको चाहिए, that is the price action bullish। और साथ में since ये initial buy fail हो गया है, साथ में एक alert डाल दीजिए Alt A करके कि शॉर्ट ट्रेंड जो है वो बुलिश। ये जब अलर्ट आ जाएगा देन ओनली विल थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। नेचुरल गैस फिर से हम लोग 125 मिनट्स, क्रूड ऑयल सिर्फ मैं डेली में देख रहा था दिस टाइम। नेचुरल गैस वी डिस्कस, यहां पे हम लोगों को बाय नहीं करना चाहिए, दिस इज वेयर वी एग्जिटेड। फिर से री एंट्री का मौका आया एंड नेचुरल गैस सिंस देन हैज गॉन फर्दर डाउन। वेरी लाइकली ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स का और एक बार टेस्ट होने वाला है। विल इट ब्रेक? इट इज टू अर्ली टू से दैट। डेली के हिसाब से लास्ट डे और एक मौका था एंट्री करने का, with after green socks there is a full red candle, but this entering in this candle will not be a right decision because ये हम लोग का short term momentum जो है वो साथ में नहीं है। तो entering this trade we will play short momentum bearish and very likely 125 मिनट में जो हम लोग सेल है, this will reach our target. So NG में 125 minutes and बाकी इसमें I'm using the 125 minutes, and crude oil में it was very early reversal which did not work out,
तो इसके लिए मैं डेली देख रहा था, तो डेली में इसमें एग्जिट आ गया विद द बैकग्राउंड येलो with marginal loss, and I will now wait in the sideline to see what happens more in the crude oil for further entry. इसके अलावा हम लोग क्विकली एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को चार्ट को देख लेंगे, एंड इसके लिए वी विल यूज द इंडेक्स फ्यूचर। एंड निफ्टी का चार्ट जो मैं लगाया हूं, दिस इज ब्रॉडली बुल के हाथ में है। कैंडल इज ग्रीन, बट दोनों साइड कैंडल बड़ा है, मतलब वी कैन सी बोथ साइडेड वोलेटिलिटी, मतलब सम ड्रॉडाउन्स कैन बी देयर, बट ब्रॉडली दिख रहा है दिस इज इन द कंट्रोल ऑफ द बुल्स। फिर हम लोग आ जा रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वाज अ कमबैक स्टोरी, आफ्टर दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम करेक्शन। बुल रन इज नॉट ओवर। इसको ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन बुलिश, मतलब एक फुल ग्रीन कैंडल, उसका अलर्ट डाल दीजिए एंड यू आर ब्रॉडली डन। सो ये रहा वीकेंड का डिस्कशन, स्पेशली रिगार्डिंग करेंसी एंड कमोडिटी। आई डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्प होगा। अगर हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड and happy trading.